Hello friends, welcome to my channel SujatasTuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6, chapter number 4, that is maps. In this chapter we are going to learn about what is map, what are different types of map, atlas, components of map, scale, symbol, conventional symbol, sketch, plan, etc. So without any ado, we will start the video. But before it, do not forget to like, share and subscribe my channel. So let's start. In previous chapters, we learned about globe. What is globe? Globe is a miniature model of Earth on which there is continent, countries and oceans are shown in their correct size and shape. Then why we use map? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जब ग्लोब है तो फिर मैप क्यों आन पड़ा पढ़ाई करने के लिए? तो ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस है. हम ग्लोब पे कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, विलेज इनका डिटेल स्टडी कर नहीं सकते और इसीलिए हम यूज़ करते हैं मैप का. क्यों? क्योंकि मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ एनी अर्थ सरफेस और एनी पार्ट ऑफ अर्थ which is not possible in case of globe. So when we want to study earth as a whole, we use a globe, but for a detailed study of any particular country, state, district, town or village, we use map. Then what is map? Map is a drawing of any part of earth अकॉर्डिंग टू स्केल. हम स्केल का यूज़ करके किसी अर्थ के एक पार्ट का जो ड्राइंग बनाते हैं उसे हम मैप कहते हैं. और इस मैप के भी बहुत से डिफरेंट टाइप है और ये स्केल लेने के भी बहुत से तरीके हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन केम, व्हाट इज एटलास? व्हेन मेनी मैप्स पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास and these atlas are of various size and they provide more information than globe because they are very detailed and they give particular information of any topic in a detailed manner. They are also useful for various purpose like educational, research, survey, etc. So now we will see what are the different types of map. The very first one is physical map. What is physical map? The map showing natural feature of earth is called physical map. And what are these natural features of earth? Mountain, plateau, plains, rivers, ocean, all these are natural features of earth. And when they are shown in map, the map is called physical map. Second one is political map. What is political map? The map was showing different countries, different states, cities, village, town with their political boundary. Such a map is called political map. Third one is thematic map. What is thematic map? थीम मतलब क्या? वो किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करेगा, उसका एक अपना पर्टिकुलर थीम होगा. सो सच अ मैप इज कॉल्ड थीमेटिक मैप. इन विच फॉर एग्जाम्पल रोड मैप. अब एक ऐसा मैप जहाँ पे सिर्फ रोड्स की इंफॉर्मेशन दी होगी कि कौन सा रोड कौन सी सिटी से कौन से स्टेट से कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल मैप. रेनफॉल का पैटर्न दिया होगा उस मैप में कि कौन से रीजन में कितना रेनफॉल होता है, कौन से रीजन में ड्रॉट है, कौन से रीजन में हाई रेनफॉल है, कौन से रीजन में माइल्ड रेनफॉल है, इस तरह. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, distribution of industry. These all are thematic map and they focus on particular information or a specific part of that particular point. Then next is what are the different components of map. अब हम मैप देखते हैं तो मैप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, उनके ही बेसिस पे हम मैप्स का स्टडी करते हैं या फिर मैप्स बनाते हैं और उसी की वजह से मैप्स के आज इतने सारे एप्लीकेशंस हैं. So what are these important components of map? So very first is distance, second one is direction and third one is symbol. So पहले वाला देखते हैं हम distance. अब जब हम सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे जो डिस्टेंस देखते हैं टू प्लेस के बिटवीन वो तो बहुत ज़्यादा रहता है.
पूरे कंट्री का देखो या फिर पूरे वर्ल्ड का देखो, हम उस पूरे डिस्टेंस को सिकुड़ के एक पेपर शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे मैप का। सो वी विल सी व्हाट इज दिस कंपोनेंट। मैप्स रिड्यूस entire world to fit on sheet of paper, but these reduction done very carefully so that small distance on paper represent large distance on ground। हम जो भी ग्राउंड पे लार्ज डिस्टेंस रहता है उसको पेपर शीट पे भले ही स्मॉल करके दिखाते हैं, लेकिन ये जो स्केल है इसको बहुत केयरफुली रिड्यूस किया होता है और ये स्केल का बहुत इम्पोर्टेंस भी है। एंड द स्केल इज चूजन फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, इस तरह से। देन व्हाट इज स्केल? इट इज रेशियो बिटवीन actual distance on ground and distance shown on map. For example, if your school and your home has 10 kilometer distance, but if you want to show it on your map, then what will you consider? 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Then on map 2 centimeter is equals to 10 kilometer. If you take 1 centimeter is equals to 5 kilometer, then 2 centimeter is equals to 10 kilometer, and that will be the distance between house to your school. And how would you able to calculate this distance? If you know scale, then you are able to calculate distance between these two places. When large areas, which large areas? Like countries, continent, they are shown on paper, we use small scale. Why? Because the distance of countries, continent is very large, so we use small scale. For example, 500 kilometer distance is shown just 5 centimeter. And when small area, which small area? Like village, town, shown on paper, we use large scale map. That is 500 meter is shown as 5 centimeter. Here we use kilometers and here we use meter. Why kilometer? Because the area of countries, continent is such a large, so it is not possible if we use the scale in meter to show countries and continents. So for countries and continent we use such a small scale, that is 500 kilometer are shown in just 5 centimeter, and here we 500 meter is shown for 5 centimeter. So it is a small scale and it is a large scale map. Now the second component of map which is very important, that is direction. हमने बहुत सी बार देखा है कि मैप पे एक नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे डिनोट करके रखते हैं वो, तो ये क्या दर्शाती है? ये है नॉर्थ डायरेक्शन, और उसकी मदद से हम बाकी डायरेक्शन को आसानी से याद कर सकते हैं या फिर डिक्टेट कर सकते हैं. सो द मैप कंटेन एरो मार्क विथ लेटर N at upper right hand shown the north direction, and this north direction is called north line. There are four major directions. Which are four major directions? North, south, east, west. North, south, east, west. These are four important or major directions which are also called cardinal points. And which are four intermediate directions? North, east. जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच है मैंने, ये है नॉर्थ ईस्ट. देन साउथ ईस्ट, बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, दिस इज साउथ ईस्ट. साउथ वेस्ट, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. अब हम इसे कंसिडर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए नॉर्थ से इनका डिनोशन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. अगर हम
इंडिया का मैप कंसिडर करें, अगर हम एक क्विक मैप बनाते हैं तो इस मैप पे हम इसको ड्रॉ करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है। नॉर्थ में क्या है हमारा, कश्मीर, वेस्ट में गुजरात, ईस्ट में आसाम, साउथ में केरला तमिलनाडु, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना। इस तरह हम इस कार्डिनल पॉइंट से, दैट इज़ मेजर डायरेक्शन की मदद से और इंटरमीडिएट डायरेक्शन की मदद से बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एंड दिस हैज़ अ वेरी important applications in the subject of geography also। आपने कंपास के बारे में तो बहुत सुना होगा। जब पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे तो तब वो कंपास का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर जो सी वॉयजेस रहते थे, जो समुद्र से आवाजाही करते थे, वो कंपास का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। सो व्हाट इज़ दिस कंपास? Instrument used to find out main direction, because this compass has magnetic needle and this magnetic needle is always point towards north south direction। जब भी north south direction आएगी ये stable हो जाएगा। So using this compass they are finding out main direction। अब हमारे मैप में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिंबल। हमने डिस्टेंस देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया, अब हम देखते हैं सिंबल। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिंबल इन मैप? इन मैप देयर इज अ लिमिटेड स्पेस, so it is not possible to draw on a map actual shapes and size of different features like building, road, bridge, ट्रीज। ये पॉसिबल है क्या? हम पूरे मैप पे ये सब ड्रॉ कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए? नहीं, ये नहीं हो सकता। सो दे आर शोन यूजिंग सर्टन लेटर्स, सर्टन पिक्चर्स, सर्टन कलर्स, शेड्स, लाइन्स। सो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी collected in limited space. So symbols give lots of information in a limited space. Symbols are simple to read. Symbols can be drawn easily. And symbols don't need to know language of area because the symbols have universal language। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट्स में जाते हैं जहाँ आपको उस लोकल लैंग्वेज का कोई पता ही नहीं है, लेकिन इन सिंबल्स का जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब हर किसी कंट्री में उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। सो दिस सिंबल्स आर वेरी हेल्पफुल इन द रीजन even though you do not know the local language of that particular area। So this is very important application of these symbols in reading of maps। अब इन symbols में भी कुछ को कहते हैं conventional symbols। Why conventional symbols? Because these symbols has universal language। Why universal language? Because these symbols are accepted by all countries through international agreement regarding their use, and so they are called conventional symbols। And which are these things for which these conventional symbols are used universally through international agreement? For railway line, for roads, for boundary, river, post office, police station, settlements, graveyard, temple, church, mosque, chhatri, trees, grass, all shown by conventional symbols। Along with these conventional symbols, there is also colors which are used for different purposes। For example, blue used to denote water body, brown used to denote mountains, yellow color used to denote plateau, green color used to denote plains। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं रेलवे लाइन। दिस इज द ब्रॉड गेज and this broad gauge is shown here,
meter gauge here, railway station this one. So these are different symbols for these different types of railway line. Then road. For metal road, this plain line. For unmetal road, this dotted line. For international boundary, this one. For state boundary, this line. And for district boundary, this simple dotted line. In case of rivers, for well, this dot. For river, this flow. For tank, this circular shape. For canal, this L shape. And for bridge, this symbol is used. Also for temple, this symbol is used. Then for church, this second symbol. For mosque, this third symbol. For chhatri, this fourth symbol. To denote post office, the letter used is PO. To denote post and telegraph office, the letter used is PTO. To denote police station, the letter used is PS. For a settlement, these squares are used. For a graveyard, these semicircles are used. For trees, these simple shapes are used. For grass, this picture is used. So lots of information is shown in terms of symbols on a map. So it is very easy to read and understand particular information about that particular area. Here we can see the applications of this symbol in the area shown in this map, such as this is the river, this is the temple, this is the graveyard, this is settlements, it is a tree, it is unmetal road, and it is metal road. It is a broad gauge, it is meter gauge. So this is bridge. So such a information we can easily read out without reading any particular description about that figure by taking information or knowing information of these symbols. अब आप इस फिगर को गौर से देखिए. यहाँ पे दिया हुआ है स्केल. What is the scale? 1 centimeter is equal to 10 meter. Means on earth there is a 10 meter distance, but on paper it is shown by just 1 centimeter, and which we can see in this picture. The house of Vikas, then Sheila, then Karim, they are away from just 1 centimeter, that is 10 meter distance. This orchid, then school, and we can study this with respect to direction, that is whose house is east or whose house is west, community center is north or south, playground is northeast or southeast. These information we can gather from these directions, and these directions is very important to locate particular place on this map. Then what is sketch? Sketch is a drawing which is based on memory and spot observation, and it is just a rough drawing without any scale. ये अगर कोई फ्रेंड आपको उसके घर का पता पूछता है तो आप उसको रफली बता देते हैं कि उस रोड को पार करके उस रोड तक हमारा घर है. तो ये क्या होगा, ये मेमोरी बेस हम स्पॉट ऑब्जर्वेशन करके वो इन्फॉर्मेशन बता दें, और इसका हम रफ स्केच भी उसको बनाकर दे सकते हैं. बट मैप के केस में हम रफ स्केच नहीं बनाते. मैप इज़ बेस्ड ऑन स्केल. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड मैप. देन व्हाट इज प्लान? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. अगर आपको आपके क्लासरूम का प्लान बनाना है तो आप उस प्लान में बना सकते हैं कि सर का डेस्क कहाँ रहेगा, ब्लैक बोर्ड कहाँ रहेगा, डोर्स कहाँ रहेंगे, विंडोज़ कहाँ रहेंगे, स्टूडेंट्स के बेंच कहाँ रहेंगे. सो दिस इज़ द प्लान ऑफ योर क्लासरूम, एंड दिस प्लान यू कैन नॉट शो ऑन द मैप. सो प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. So, and length or breadth of any particular room or your house is shown in a plan, but this information you cannot show on a map. So this is the difference between plan and map. Hence sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale, and plan is a drawing of small area on a large scale, for example length and breadth of room, classroom, etc. So we completed this chapter. Now let's see this small quiz. The very first question is, map showing distribution of forest are
thematic map, because in this map we get the particular information about forest. The blue color is used for showing water body. Compass is used to find main direction and it is stable in north south direction. A scale is necessary for map. हमने अभी देखा कि स्केच के लिए कोई स्केल नेसेसरी नहीं, वो तो मेमोरी पे डिपेंड होके भी हम बना सकते हैं. सो स्केल इज नेसेसरी फॉर मैप. सो इस तरह हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.